Citizens, Namaskar. My heartiest greetings in advance to all Indians living in the country and abroad on the eve of the 76th Independence Day. I am delighted to address you on this momentous occasion. India is completing 75 years as an independent nation. 14th August is observed as Partition Horrors Remembrance Day so as to promote social harmony, unity, and empowerment of people. When India won independence, there were many international leaders and experts who were skeptical about the success of government in India. They had their reasons to be doubtful. But we Indians proved the skeptics wrong. Democracy not only grew roots in this soil, it was enriched too. पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। यह भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारा गौरवशील स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। Dear citizens, for a nation, particularly an ancient one such as India, the passage of 75 years is merely a blink of an eye. Senior citizens among us have witnessed a dramatic change in their lifetime. The lessons learnt in the process will prove useful as we move towards the next milestone in the journey of the nation, the Amrit Kal, the 25 years to the celebration of the centenary of our. By the year 2047, we will have fully realized the dreams of our freedom fighters. We will have given a concrete shape to the vision of those who, led by Baba Sahab Bhimrao Ambedkar, drafted the Constitution. We are already on the course to build an Atmanirbhar Bharat, an India that would have realized its true potential. The world has seen a new India rising in recent years, after the outbreak of COVID-19. Our response to the pandemic has been appreciated everywhere. We launched the biggest vaccination drive in human history with vaccines manufactured in the country itself. Last month, we crossed the 200 crore mark in cumulative vaccine coverage. In combating the pandemic, our achievements have been better than those of many developed countries. For this feat, we are grateful to our scientists, doctors, nurses, paramedics, and the staff associated with vaccination. कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या, हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने का श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फिजिकल के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी
को बेहतर बनाया जा रहा है, लेकिन यह तो केवल शुरुआत ही है। दूरगामी परिणामों वाले सुधारों और नीतियों द्वारा परिवर्तनों की आधारभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के अगले चरण के लिए तैयार करना तथा उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। Dear citizens, India's newfound confidence stems from the spirit of its youth, its farmers, and above all, its women. Gender inequalities are reducing and women are moving ahead, breaking many glass ceilings. Their increasing participation in social and political processes will prove decisive. Our daughters are the biggest hope for the nation. Some of them brought laurels for the country at the recently held Commonwealth Games. Of course, India's sportspersons have been making the country proud by their performance in international competitions. A large number of our winners come from underprivileged segments of society. From becoming fighter pilots to space scientists, our daughters are scaling great heights. Dear citizens, in celebrating Independence Day, we are celebrating our Bhartiyata. Our country is full of diversity, but at the same time, we all have something in common. It is this thread which binds all of us together and inspires us to walk together with the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. प्यारे देशवासियों, हमारे पास जो कुछ भी है हमारी मातृभूमि का दिया हुआ है। इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे अस्तित्व की सार्थकता एक महान भारत के निर्माण में ही दिखाई देगी। कन्नड़ भाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध करने वाले महान राष्ट्रवादी कवि कुवेंपु ने कहा है, नानु अलीवे नीनु अलीवे नम्मा एलु बुगल मेले मुडु वधु न भारत दलीले। अर्थात मैं नहीं रहूँगा, ना रहोगे तुम, परंतु हमारी अस्थियों पर उदित होगी नए भारत की महागाथा। To follow these ideals is my special appeal to the youth of the country who are going to build the India of 2047. My best wishes to all of you. Thank you. Jai Hind. This brings us to the end of the address to the nation by Honorable President. The complete text of the address is available here. Both soft and hard copies are easily accessible here. My colleagues from the High Commission, they are around to assist you as required. It is now also my honor to add that our Honorable Prime Minister, in his address to the nation this morning, set out 5 commitments for New India as it heads towards its independence centenary. An India that is developed, an India free of colonial mindset, an India proud of heritage, an India united and integrated, an India whose citizens put duty above all. Thank you. Allow me please to now make a couple of points before we progress to the next part of the program today. Firstly, a few words about taking forward the India-Kenya
relationship. On a broader scale, India's approach is guided by the 10 principles of engaging Africa, as enunciated by our Prime Minister in July 2018. Africa's priorities would continue to be the paramount factor in our bilateral cooperation. Over the last several years, India and Kenya have built cooperation in diverse areas, largely aligned with the Big Four agenda of Kenya, including manufacturing, affordable housing, universal health, and food security. Our partnership is an example of our strong commitment to South-South cooperation, which we are determined to take to new high levels. While we are happy with the steadily increasing bilateral trade, we also seek to strengthen our bilateral development cooperation and to work together to enhance partnership through exploring further opportunities both in the government and private sectors in the areas of healthcare, including telemedicine and traditional systems of medicine, agriculture, including its mechanization, environment, information and communication technologies, tourism, higher education, automotives, and defense and security. Both India and Kenya are currently serving in the United Nations Security Council. We are committed to a rules-based multilateral system, and we are satisfied that our collaboration, underlining the important role of the United Nations in addressing global challenges, is progressing well. As two maritime neighbors, India and Kenya recognize the importance of ensuring greater security, safety, and prosperity of the Indian Ocean region. Some of you may be aware that an Indian naval ship, INS Tabar, arrived at the port of Mombasa yesterday as part of commemoration of 75 years of India's independence worldwide. The government of India has deployed Indian naval ships to 7 destinations around the world for the hoisting of the Indian national flag as part of the India at 75 celebrations or Azadi Ka Amrit Mahotsav. Kenya has been chosen as the only place for this purpose on the entire African continent. This is indeed symbolic of the excellent relations between India and Kenya and the strength and depth of our mutual goodwill and friendship. The Chief of the Kenyan Defense Forces, joined by the Chief of the Kenyan Navy, will be there as the chief guest at a small event that I am hosting on board the ship this evening in Mombasa. This visit of INS Tabar to Kenya as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav would no doubt prove to be a major event in the history of our bilateral relations. No conversation on India-Kenya relations is ever complete without recognizing your role, without recognizing the role of the thriving Indian origin community in Kenya as an important bridge between our two countries. This year, in particular, I convey my grateful thanks to one and all who have been associated with Azadi Ka Amrit Mahotsav celebration in diverse parts of Kenya for their remarkable enthusiasm and contributions to making India at 75 such a huge success in this beautiful country. And now, before I
conclude, I believe it would be in order for me to share with you, as many of you may already be aware, that this is the last time that I am having the good opportunity of being with you, of meeting you in this format. Upon completion of my tour of duty as the Indian High Commissioner, I leave Kenya in a few days' time. But I would like to take this opportunity to say a big thank you to you all for making my stay here both productive and pleasant. Much of it was one way or the other overshadowed by the virus, but I leave Kenya with a certain measure of satisfaction that thanks to your cooperation, thanks to your friendship, thanks to your assistance, and the working together of the community, different parts of the community, diverse community organizations with the Indian High Commission in achieving what we have achieved over the last 2 years or so. It has indeed been extremely satisfying, and with these words I wish you the very best. Thank you once again. Use that. Thank you, sir. Now we proceed to the cultural program. First up, we have the cultural performance by Miss Ananya Pal and troupe, and the performance is titled Azadi Ka Mahan Safar, taking us through the incredible journey in India's quest for freedom from 1857 and 1947. It is scripted and directed by Miss Ananya Pal and also narrated by Miss Ananya Pal and Krishna Kisle. The choreography is done by Janani Rajasekaran and Shushma Reddy. The performers are Ananya Pal, Krishna Kisle, Raki Kisle, Janani Rajasekaran, Indira Suran Raman, Vadev Rajkumar, Shawani Sundar, Dari Sundar, Navya Rajasekaran, Navadip Rajasekaran, Kesai Srutika, Shanvi Shailesh, RSM Biradipa, Kanti Joshi, Kanishka Kislaya, Kavan Kislaya. Welcome. Good morning, His Excellency, Honorable Deputy High Commissioner, and the distinguished guests. Today we will be performing on the incredible journey of freedom fight of India. Azadi Ka Mahan Safar. Bharatvarsh, the land of a great civilization, had been too enticing for many invaders historically, like Shaka, Han, and Mughals. They came and invaded, but fell in love with the land and eventually became part of it. When the British came as traders, they took opportunity of lack of unity among the rulers and fought battles to get control over this great country and her enormous fortune.
At the dusk of 23rd June 1757, sun went into eclipse and Bharat Mata was imprisoned with the fall of Nawab of Bengal in the Battle of Plassey. Hundred years later, in the year 1857, the Sepoy Mutiny initiated an uprising against the British rulers. The spark that Mangal Pandey ignited in Barakpur camp spread like wildfire in Meerut, Delhi, Ambala and Kanpur. Tatia Topi, Nana Sahib and Rani Lakshmibai became the leaders of the revolution. The bravery and sacrifice of the Queen of Jhansi became a legend that inspires us till today. सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जबानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ या भारतवासी। The revolution that started in 1857 became a full-fledged freedom fight since 1885 as the distinguished social leaders like Bal Gangadhar Tilak and Veer Savarkar started demanding for autonomy. Mahatma Gandhi came back to India from South Africa in 1915 and united the youth in protesting against the British oppression. His non-violence movements got mass momentum. Subhash Bose joined the cause. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलां सुफलां मलयजशीतलं शस्यश्यामलां मातरं वन्दे। सुजलां सुफलां मलयजशीतलं शस्यश्यामलां मातरं। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनी। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां वन्दे। There was another segment of freedom fighters who believed in armed revolution and were ready to make supreme sacrifice for the motherland. The young martyrs like Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Surya Sen and Pritilata Vadedar set example for others with their gallantry and altruism. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ऐ शहीदे मुल्क व मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वाए किस्मत पाओ एज ऑफ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। मैं कदा सुनसान खुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर, सर निगू बैठा है साकी जो तेरे महफिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं हमारे क्या दिल में है। अब न अगले वलवले हैं और न वो अरमा की भीड़, सिर्फ
मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। The Second World War started. British were busy fighting Germany in Europe. Subhash Chandra Bose, famously known as Netaji, escaped to Germany with the idea of attacking British army in India from outside. Finally, he led the Indian National Army from Rangoon to march to Manipur and Nagaland to face the British force. Bose's army was defeated, but his mission did not fail. The confidence of the British rulers was badly shaken. ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जो से वतन बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। चलो दिली पुकार के, हमें निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के, लहराए जा लहराए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए। Finally, in the year 1947, on 15th August, Bharat Mata got back her freedom. A new nation, India, appeared in the global map of modern time. Let us humbly remember the struggle and sacrifices of our great freedom fighters in this auspicious occasion of the 75th year of independence, and take a pledge to take our country to a new height. Jai Hind! Jai Hind! जय हिंद। Let us all rise up for the national anthem, please. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thank you, Madam Anaya Pal and troop, for taking us through this journey of independence of India.
Let us give them all a big applause. Next, we have Mr. Dananje Deshpenda, who will be performing a flute recital. Welcome. Just give me mic. Yeah, that's okay. Yeah. Good morning, Your Excellency, and everybody else here. The Indian independence, India got its independence because a lot of freedom fighters fought, and it was very well depicted in one of the songs of late Lataji. So I'm trying to play that song today on this occasion. Thank you.
Let us give him a better round of applause. And now we have some in-house talent from the High Commission. First, we have a rendition of the song Hindesh K. Nevasi by the High Commission ladies. Miss Femida Sheikh, Nima Basht, Kiran Kishore, Divya, Pami Chandre, Rumi, and Manju Singh. Welcome, ladies. हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। कोयल की कूक न्यारी कभी है कि ढेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी कभी है कि ढेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। हिंद देश के
सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। Thank you, ladies, for this wonderful performance. Let us give them a big round of applause. Next up, we have yet another song by Naman, Anshish, and Vashika. The song is entitled Aya Watan. भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है, भारत माँ की रक्षा में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्ता हमारा है। ए वतन वतन मेरे आजाद रहे तू, ए वतन वतन
रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं, तुझ पे कोई गम की आँच आने नहीं दूं। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। जय हिंद। Thank you, ladies. Now let us change the groove a little bit and get ready for some dance performances. Let us have on stage young Arav, who is going to perform the song India Wale. Mr. Arav. मारे यहाँ को मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा थोड़ा आवाज है। ऐसे है चाहे वैसे है, अरे जो भी है जैसे है, खुद पे हम नाज है। जानिया हमको ये ज़माना, चाहो तो हमको आज़माना। यारबाज हम जानसाज हम इश्कबाज दिलवाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। सुनते दिल के तार से इंडिया वाले, हर चीज जीत ले हार से इंडिया वाले। दुश्मन के छक्के छुड़ा दे इंडिया वाले, छक्के छुड़ा दे इंडिया वाले। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है जो तुम भी कहो। Club Hall Shatuka Live Club. Just hold there. Thank you, Mr. Arab, for that beautiful performance. Finally, we have Vanshika, who is going to perform a song, This Jesh Mei Ganga Ratna Hai. Welcome.
गीत सुनाती है। बच्चा वह आज भी चांद को चंदा मामा कहता है। जिस देश में गंगा रहता है, जिस देश में गंगा रहता है। गाँव का पनघट का पानी भरे गगरिया कोई दीवानी। ठंडी ठंडी पुरवाई में मीठी मीठी खुशबू। मत पूछो उस खुशबू में होता है कैसा जादू। जादू ऐसा होता है कि हर कोई झूमता रहता है जिस देश में। What a beautiful performance. Let us give her a round of applause. Let us also give every performer a big round of applause. With that, we conclude today's celebrations. Thank you very much for joining us today. We wish you a very happy Independence Day to all Indians and friends of India in Kenya. Before we conclude, we have a little surprise for you. We have a special selfie booth where you can take selfies and post on your social media. Please don't forget to tag us at India in Kenya. Let us show our love for India as it concludes 75 years of its independence and be part of this Azadi Ka Amrit Mahotsav. Thank you everyone, and don't forget to take back some mementos that we have for you for remembering this day. Now I will invite all the guests to proceed to the food counters for tasty India refreshments, and there are 3 counters, so you can go to any of them to avoid any queue. Thank you very much. Asanteni sana. Thank you very much. थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरी, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे, थोड़ी सी खुशबू बाराई से पवन की, थोड़ी सी धुकने वाली धक 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 Zima. Yeah, it's okay. This, Ganesh, Ankur, put this on him. Put this on him. ले आए। कहाँ पे? अरे Sir, we'll put this. Hi. वहाँ पकड़ लेना। हाँ. सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो।
नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदू।